So, what is the purpose of this strike today, sir? See, the development, I'll explain the background first. If you have to access the jurisdiction of the Delhi High Court, अगर किसी client को दिल्ली हाई कोर्ट आना है कमर्शियल साइड में, उनके सूट का मिनिमम वैल्यू होगा 2 करोड़. दैट इज द पोजीशन टिल डेट. एंड ये फिगर जो है 20 लाख से 2 करोड़ बनने में 10 साल लगा, क्योंकि बीच में 1 करोड़ हुआ, उसके बाद ये 2 करोड़ बना. दिल्ली हाई कोर्ट का ये पॉलिसी है उनके रूल्स के मुताबिक कि आप जो कोर्ट फी देंगे वो एड वैलोरम होगा. इसका मतलब ये है आप जितना डैमेजेस मांग रहे हैं उसके हिसाब से एक परसेंटेज के बेसिस पे आपका कोर्ट फी होगा. Okay. तो अगर आप 2 करोड़ मांग रहे हैं तो 2 लाख होगा, 10 करोड़ मांग रहे हैं तो 10 लाख होगा. नाउ द इशू दैट हैज हैपेंड इज, सो कंपेयर दिस विद लेट्स से द बॉम्बे हाई कोर्ट और द मद्रास हाई कोर्ट. ऑन द ओरिजिनल साइड वहाँ पे फीस का एक कैप होता है, एक सीलिंग होता है. आप जितना भी मांगे आपका जो कोर्ट फी होगा वो 3 लाख से ज्यादा नहीं जाएगा. यहाँ पे आप जितना मांग रहे हो उसके हिसाब से वो बढ़ता जाता है. Right. So today what has happened is the full court of the High Court with several well-reasoned dissents or dissenting opinion has given an opinion to the government of the state saying that they want to push this figure from 2 crores to 10 crores. Right. So जो लॉजिक मैंने आपको बताया उसके हिसाब से अभी कोर्ट फी क्या हो जाएगा 10 लाख. For people who come to Delhi High Court. Come to Delhi High Court. So automatically what it does is that it pushes a lot of people away from the Delhi High Court. क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएंगे तो आपका कोर्ट फी कम होने वाला है. वो प्रिंसिपल तो दिल्ली हाई कोर्ट के लिए भी लागू होगा और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए भी. So I'll end up paying the same court fee to go to a forum, especially for specialized commercial disputes, which is not developed, let's say its infrastructure. Okay. दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने कमर्शियल लिटिगेशन का एक्सपर्टीज जो है पिछले 30 साल में स्टेप बाय स्टेप, ईंट बाय ईंट हमने इसको खड़ा किया है. No doubt about the commercial Okay. viability. Yes. You have seen how the registry works. We have discussed this before. Compared to other courts, within a day or 2 days, matters get listed. That's the speed of the registry. Right. People from all over the world don't go to other courts of this country. They come to the Delhi High Court for specialized litigation. Correct. Offices are moving their, let's say, companies are moving the registered offices from Bombay and other parts of the country to Delhi to access the Delhi High Court. That's what we have done. Pharmaceutical matters which require specialized adjudication from the perspective of patient interest, IP, patient interest or commercial side. This is the place to come. Right. दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट्स कनाडा में सेट किए जाते हैं, साउथ अफ्रीका में सेट किए जाते हैं. ऑल द ब्रिक्स कंट्रीज, ग्लोबल साउथ, दे लुक अप टू इंडिया एंड स्पेसिफिकली द दिल्ली हाई कोर्ट फॉर लेट्स से गाइडेंस ऑन आईपी जूरिस्प्रूडेंस. इन लेट्स से इन मिडिल इनकम कंट्री हम कैसे आईपी एंड पब्लिक इंटरेस्ट को बैलेंस करें. दैट्स व्हाट वी हैव डन. Okay. Now I am not saying district courts should not be doing it or cannot do it, but we are saying ये step by step होता है. ठीक So है. the ask of the litigants, primarily from a litigant perspective, is why don't you ramp it up in phases? अभी आपने their initial proposal was 20 crores. Then the committee has come down to 10 crores in terms of their opinion. We are saying you make it 5 crores. So you're saying reduce the figure or at least come to A negotiation. negotiation figure, because from 2 crores we are saying 5 crores क्योंकि what that will do is that it will allow both the bar and the bench of the district court to get used to these matters. Okay. स्टेप बाय स्टेप होगा. नाउ इसका एक साइंटिफिक तरीका है. मार्केट रेट के बेसिस पे कोई भी प्राइस जो है वो कनेक्ट नहीं होता है, वो सर्कल रेट के बेसिस पे होता है. व्हाट द दिल्ली हाई कोर्ट हैज डन इज दैट इट इज सेड इन्फ्लेशन बढ़ गया है, देयरफॉर हमें भी अपनी रेट्स को बढ़ाना चाहिए. नाउ वी सेड यू हैव यूज्ड द मार्केट रेट ऑफ अ प्रॉपर्टी एज द बेसिस टू डिटरमिन वेदर और नॉट वी शुड हाइक आवर court fee or let's say the pecuniary jurisdiction. It is an unscientific process because what is the legal way to connect anything? Not the market rate, it's the circle rate. And when circle rates have remained more or less the same or they've just gone up a bit, Yes. how did you use the market rate as a basis? Second, the commercial bar and the commercial litigants are a stakeholder in this process. We were not given an opportunity to present our point of view with respect to the concerns, both in terms of what will be the issues once we go there, and second, is there a problem that requires a solution? So here's the So thing. by we you mean specifically the IP lawyers or Commercial or bar. Commercial bar. The entire Right. commercial bar. IP is a part of it. This is about the commercial bar, largely speaking. IP is an important part of it. Right, right. There are 7 commercial benches here. Okay? And there are only 2 IP benches and 1 appellate bench. Now think about it this way.
सोल्यूशन तभी निकलना चाहिए जब कोई प्रॉब्लम हो. दिस इज अ सोल्यूशन विदाउट अ प्रॉब्लम बिकॉज only 12,000 cases are pending on the commercial side is the official figure that we are being told. Okay. The rate of disposal of the Delhi High Court is 2 years. क्योंकि एक अच्छा सा इंटरम जजमेंट डिलीवर हो जाता है तो पार्टीज को समझ में आ जाता है कि ये लड़ने लायक मैटर है या नहीं और ये नेगोशिएट करके सेटल कर लेते हैं. सो अ वंडरफुल मैसेज इज बीइंग सेंट एंड प्लस इवन ट्रायल्स आर बीइंग एक्सपेडिटेड. So the question is, what is the caseload here which justifies the passing of the burden or the shift? 2020 से कोविड के टाइम से यहाँ पे e-registry शुरू हो चुका है for e-filing and virtual hearing. Yeah. You know what that has done? Volumes have come down in terms of the sheer maintenance of court files. District court के पास तो e-registry है नहीं, तो जो लाखों पेजों के अभी जो केसेस हैं वो वहाँ पे जाएंगे अभी. So are you saying pendency बढ़ेगी इसकी वजह से? 100% इट विल, क्योंकि जो मैटर यहाँ पे 2 साल में खत्म हो सकता है वहाँ पे तो 4.5 साल, 5 साल, 6 साल लग जाएंगे. इवन फॉर ट्रेडमार्क मैटर्स. या I have appeared before district courts across the country, so I know what I'm talking about. ऐसा नहीं है that I've been practicing only in the High Court. I've gone to Patiala House, I've gone to Saket, I've gone to Tisasari, I've gone to Bangalore City Civil Court, I've gone to Hyderabad City Civil Court. There is not one court which has achieved the level of proficiency of this court. So we are saying knowledge transmission में time लगता है. आप इसको step by step कीजिए ताकि वहाँ के बार को भी आप hand hold करें और वहाँ के bench को भी assistance मिले. Okay? Stuff that you've taken for granted now is the product of 30 years of experience, 15 years before I entered the profession. By the time I entered the profession, so many people have gone through the grind to come where we have. Right. So this is not about protecting the interest of a particular clique or cabal. We are saying Delhi High Court as a model, if it has to be replicated, why is the Delhi High Court giving up its replicable nature? You have become a role model for people across the world for several matters. Not just for patent matters. I'll give you a simple example. Tata Sons versus Greenpeace, 2011, 28th of January 2011, Justice Ravindra Bhatt's judgment. We cited a South African judgment on striking a balance between IP and free speech. That judgment in turn got cited everywhere in the world that this is how you strike a balance between constitutional freedoms and IP. Landmark आपने establish किया है. Spinal muscular atrophy is a major problem in children. There is a drug called Risdiplam. उसमें एक wonderful judgment अभी last year हमने this Delhi High Court has delivered. There are several such examples. Global South looks to the Delhi High Court especially for patent matters. क्या आपका ये कहना है कि patent matter सिर्फ 10 करोड़ से शुरू होता है, उसके नीचे नहीं होगा? What about sole inventors? We are as a country basically asking people to invest more. If you're asking people to invest more, IP matters. If IP matters, you need to set up an example for IP adjudication. IP adjudication के आप एक role model बन चुके हो, तो उस position को आप क्यों dilute कर रहे हो? Accessibility की भी तो बात है. Lot of lawyers say कि ये सिर्फ elitist type of high court बन जाएगा अगर बढ़ गया pecuniary jurisdiction. Exactly the point. Therefore, what is the message you're sending? Only if you have deeper pockets, you'll have access to better services. That's the message you're sending. That's the message. Okay. And I can understand if someone says at least आप नीचे जाएंगे तो आपका कोर्ट फी कम होगा. लोग कहेंगे हम ज्यादा देने के लिए तैयार हैं as far as कोर्ट फीस कंसर्न, लेकिन मैटर तो डिसाइड तो हो जाए. Right. तो मैं कम पैसे दूंगा and मैं 6 साल में बैठे रहूंगा. What is the point? That's not how it works. So the genuine concern is this. Hear us out. There are legitimate concerns. Nobody is saying that सुई वहीं पे अटकी रहनी चाहिए at 2 crores. That's not even the ask here. But you escalate this step by step. And you start building the infrastructure around the place. दिल्ली हाई कोर्ट में आपने 12 बजे के पहले एक सूट को फाइल किया तो अगले दिन लिस्ट हो जाएगा. ये किसी भी कोर्ट में नहीं होता है, सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं होता है भाई. That is the extent of the registry here. Look at the infrastructure that this court has built. And this was when I entered the profession. 200 करोड़ हमने खर्च करके वहाँ पे ऑटोमेटेड पार्किंग वहाँ पे सेटअप किया है. ऐसे कितने कोर्ट्स कर रहे हैं? And this is in a city which is known for its water logging. You've managed to create this kind of infrastructure. So take pride in your achievements. The burden is not that much. And second, it is possible to phase it out. Every 5 years you do the review. Who's stopping it? And make sure that the rest of the bar also has the ability to rise up. The alternative is आप ये भी कर सकते हैं, जो कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट के नजदीक है, आप उन कोर्ट्स को स्पेशल ये let's say you give them a kind of a carve out. And you also say at least heavy duty tech matters, confidential information का हो या trade secret का हो या software का हो या copyright का हो, you will have to ensure that there's a carve out here. If you don't do that,
You've seen the recent Ilayaraja judgment. You tell me that you will go to a district court at Patiala House in a thesis hurry to take up these matters. क्योंकि हमें legislation आदि से अंत तक शुरू करना पड़ेगा. यहाँ पे डिस्पाइट द रोस्टर कीपिंग चेंजिंग एक कल्चर बन चुका है. उस कल्चर को बनने में टाइम लगेगा. Right. So because it's not dependent on an individual culture now, it has become an institutional culture. And institutional culture takes time. So these are our concerns. Great. Thank you, sir.